Good evening and warm welcome of everybody. The month of February started on a volatile note and turned into a highly volatile and impactful month. Nifty broke nearly 900 points from its highest point. It was around 18,130, 150 levels. From there, all the way we saw the levels of 17,250 to 55. We saw weakness in the most buzzing sector, which is BFSI. Due to the change in the macros, we saw fresh liquidation in the IT sector, while the auto and FMCG stocks declined on concerns of below normal monsoon expectations. There was no place left for the bulls to hide. Although the beginning of the March is quite encouraging, and today we saw a big rally in the market. Has it changed or will the upward trend continue? To find out, today we have Mr. Pankaj with us, and he will elaborate on the strategy for the month of March. So over to you, Pankaj. Thank you, Shrikant. So good evening, everyone. Welcome to the Stocks and Strategy webinar. So before I run down through presentation, let me share the screen. Yeah. So if you look at overall market performance in the last month, in the month of February, it has been quite volatile. मार्केट फर्स्ट फोर्टनाइट में करीबन 3% ऊपर गया, उसके बाद करीबन 5% सेकंड फोर्टनाइट में फॉल हुआ. और सेंसेक्स अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इस मार्केट में 1% लास्ट मंथ में करीबन 1% डिक्लाइन पे क्लोज हुआ है एंड निफ्टी क्लोज डाउन बाय 2%. ड्यूरिंग द एंटायर मंथ देयर वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड विद यूनियन बजट, एफओएमसी मीटिंग, एंड इन्फ्लेशन. हमने इन्फ्लेशन डेटा देखा नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, एंड इंटरेस्ट रेट हाइक जो हमने देखा. उसके अलावा सर्टेन ग्रुप, अडानी ग्रुप शेयर्स में भी हमने देखा जो डिक्लाइन आया था. तो इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट जो है काफी लास्ट मंथ वोलेटाइल रहा है. अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें तो कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी अगर छोड़ दें तो जो बाकी सेक्टोरल इंडेक्स है वो नेगेटिव क्लोज हुए. एंड जो बजट एंड ऑल जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ उसका कोई खास असर नहीं दिखा हमें मार्केट में. इफ यू लुक एट ग्लोबल मार्केट ऑल्सो, सो इंडिया एंड सम ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट को छोड़ दें तो यूरोपियन मार्केट हैज डन वेल एंड अदर सम ऑफ द यूएस इंडाइसेस इज आल्सो डन वेल. सो मार्केट काफी मिक्स्ड रहा था लास्ट मंथ में, और इन्वेस्टर का मेजर जो कंसर्न रहा है वही इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ पे जो रहा है द ग्लोबल मार्केट. So domestic data अगर हम देखेंगे तो in the last quarter it has been in the last month it has been quite mixed. GDP जो number towards the end of the month आया है, that we have seen that there is a growth rate has fell in this Q3 and it came in at 4.4%, and however this was in line with our estimate. And इसमें अगर जीडीपी नंबर्स में देखेंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन साइड में ग्रोथ अच्छा रहा है, करीबन 8.3% का ग्रोथ रहा है. बट द प्राइवेट कंजम्पशन हैज स्लोड डाउन एंड इट वाज वीक एट 2.1%. इसके अलावा अगर हम फोरकास्ट की बात करें, करीबन 7% का ग्रोथ फोरकास्ट किया है गवर्नमेंट ने, एंड हमारा जो फोरकास्ट है फॉर द ईयर FY23 इज अराउंड 6.8%, एंड FY24 वी आर एक्सपेक्टिंग 5.6% काइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ. आईआईपी नंबर अभी जनवरी का आना बाकी है. दिसंबर में इट वाज एट 4.3%, लोअर था. मॉडरेशन हमने देखा है, एक बिकॉज बेस इफेक्ट भी आया था. लेकिन कोर सेक्टर का जो डेटा आया है जनवरी का, दैट वाज 7.8%, इट वाज क्वाइट डिसेंट विज़ावी दिसंबर. और ट्रेड डेफिसिट का डेटा जो हमने दिसंबर का देखा था, दैट हैज आल्सो नैरोड डाउन इन द मंथ, एंड दिस वाज लेड बाय शार्प फॉल इन द on a month-on-month basis in the imports due to transport and energy segment. GST collections around 1.5 lakh के अराउंड चल रहा है और वो मेंटेन रहा है मोर और लेस. तो ओवरऑल मार्केट में क्या वरी रहा है? The most important thing that we have seen is the inflation. So in US the CPI rose 0.5% in January, and on a
सो अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो ये 6.4% का जो हमें ये नंबर दिख रहा है, ये क्वाइट हाई है vis-a-vis FOMC का कंफर्टेबल लेवल जो which they are targeting at 2%. So it is way beyond that. Globally also in euro area, the inflation rate was 8.6%, Japan 4.3%, other markets quite high. So overall inflation पे एक concern रहा है. अगर FOMC का अगर हम देखें जो US Fed का जो overall outlook रहा है in terms of interest rate पे, we've seen in the last month they have increased it by 25 bips to 4.5 to 4.75, and not only US but other central bank has also increased the rates, like ECB ने करीबन 50 बिप्स से रेज किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 बिप्स से किया है, ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक ने भी करीबन 25 बिप्स से इंक्रीज किया है. So interest rates are increasing, and the Fed rate and the US Fed in the minutes have also indicated that there would be another 50 bips rate hike. That is what we can expect, and it can tend towards 5% by CY23 end. So जो पहले हमारा एक्सपेक्टेशन आ रहा था मार्केट में बहुत पहले, लाइक कि टुवर्ड द एंड कुछ पुल ऑफ होगा इंटरेस्ट रेट, बट इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट. So now all hope on the interest rate coming down is for CY24. अगर RBI की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी ट्रेंड सिमिलर रहा है, बिकॉज दे फॉलोड द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो. तो 25 बिप्स का रेट हाइक RBI has done, and the reasons were largely the adverse weather event है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिस्क दिखता है हमें. ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे भी एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी, जो डिमांड अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो भी वोलेटिलिटी रहेगी वो एक इम्पैक्ट रहेगा. तो ओवरऑल there are expectations that the inflation is expected to be challenging in the near term. So headline inflation जो हमारा नंबर आया है करीबन 6.52% का, so that has raised the risk of high interest rate at the repo rate in the coming RBI policy as well. तो अगर ओवरऑल हम देखें so inflation का जो forecast आया है, so inflation is expected to be around 6% for the year. So in terms of outlook, अगर हम overall देखेंगे तो जो outlook रहा है कि repo rate will increase, is expected to increase in April by around 25 bips to 6.75%. And key reason is of course the elevated core inflation, volatile food prices, and increase higher terminal rate in US, because US में भी अभी increase होंगे, and uncertainty in the commodity prices. So a further 25 to 50 bips rate hike is possible, and which can take the repo rates our pre-COVID level. So on the GDP side, there is a forecast, as I stated earlier, is around 6.8% for FY23, and FY24 5.6%. That's what we estimate. Valuation, if you look at the Q3 results also, so Q3 results was marginally below our expectation, and in our result update note also we have said like there is a little scope, or we do not see any chances of earning upgrade in the near term given the muted outlook for the economic growth. In fact, there is a risk on the downgrades also because of consumer जो discretionary spend है वहाँ पर slowdown दिख रहा है, and overall demand impacted रहेगा, तो उसकी वजह से एक downgrade का risk हमें दिखता है. So we expect Nifty 50 index to grow at their earnings to grow at 10.5% in FY23, 14.7% in FY24, and 15.9% in FY25. So we see an increased risk of monetary tightening in India following the global policy and the inflation. And valuation, if you look at Nifty, is trading at 21.5 times and roughly 19 times and 16 times on FY 23, 24 and 25 earnings. So which is at an expensive level given the past history. So we continue to find the valuation to be expensive in Indian market, and barring banks, most of the indices are
the sectors are trading at an expensive valuation. So we maintain our view that there would be a further time correction in the Indian market, and any negative surprise on the inflation may increase the risk of price correction as well. तो ये वैल्यूएशन जो बैंड हम देख रहे हैं, अभी निफ्टी इज अराउंड एंड द upper side. So valuation is expensive. So with this, we are recommending 7 stock ideas. Apollo, on which we have buy. Indraprastha Gas, we also have buy. PI Industries, add. And Motherson, where we have add. Tech Mahindra, we have a buy, and Thermax and Varun Beverages, all are buy. So first, I'll take you through Thermax, where we have a buy rating and we have fair value of 2470. So Thermax is a stock in the capital goods space which has done well. In fact, it's a good play on the energy transition, the clean energy story. In fact, the company is investing in the capabilities to come up with the new products and provide more solution on the green energy side. It is reported very decent margins, in fact, in the last few quarters because of the price, the product mix, as well as the price benefit that they have got, the raw material price correction benefit which we have seen. And if you look at overall budget announcement also, it was more focused towards the waste to energy side and the more on the green energy side. So there it will be benefited. And if you look at the overall Q3 results, the net profit of the profit before tax of the company has been above street expectations, and the company has reported revenue and earnings growth of more than 25% and 50% respectively. So we expect that the earnings to grow at around 43% in FY24 and 20% in FY25, and we have a buy recommendation on Thermax with a target price of 2470. Now I hand over the screen to Amit. Thank you, Pankaj, for the detailed presentation. हमारा next pick है Varun Beverages. We have a buy rating on the stock with a target price of 1500. Varun Beverages second largest bottling plant है PepsiCo beverages का in the world outside United States. कंपनी प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है कार्बोनेटेड ड्रिंक, जूसेस, पैक ड्रिंक वाटर इन 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. इस कंपनी के लिए सबसे जरूरी है हॉट एंड अनइंटरप्टेड समर सीजन, और हमें लगता है कि ये साल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये साल समर सीजन बहुत ही स्ट्रांग है. जो रिसेंट क्वार्टर पास हुआ है उसमें वरुण बेवरेजेस ने बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स दिए थे. 28% year-on-year growth in value and 18% year-on-year growth in volume. इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे जो की रीजन था वो है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी ड्रिंक स्टिंग एंड आल्सो शेयर गेन्स इन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स. स्टिंग का सक्सेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा एस्टिमेट है कि CY23 में 75% वॉल्यूम ग्रोथ देगा, और ये जो है अभी 110 मिलियन केसेस से 200 मिलियन केसेस पहुंच सकती है बाय 2026. पेप्सिको ने वरुण बेवरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट किया है टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल लेज, डोरिटोस, चीटोस इन मोरक्को फ्रॉम दिस करंट क्वार्टर. वरुण बेवरेजेस ने ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू किया है कुरकुरे पॉपकॉर्न उसके यूपी यूनिट में. तो वरुण बेवरेजेस एक ऐसा स्टॉक है जो उसका ग्रोथ इज ऑलवेज स्टेड अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द एंटायर सेमी डिस्क्रिशनरी स्पेस. डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका तो मेन कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है और सक्सेस ऑफ एनर्जी ड्रिंक स्टिंग. कंपनी की जो अभी कंस्ट्रेंट्स है कैपेसिटी के, उस पर भी कंपनी ध्यान दे रही है और कैपेसिटी एक्सपेंड किया जा रहा है. तो मोटा मोटा हमारा एस्टिमेट है कि कंपनी टू डिलीवर 18% रेवेन्यू and 26% earning CAGR over the next 2 calendar years. And this is one company which is continuously reporting strong quarterly numbers, surprising us and seeing upgrades. So we expect this trend to continue and we remain positive on the stock with a target price of 1500 and a buy rating. Over to Harun, sorry.
Thank you, Amit. Samvardhana Motherson is the stock in the auto ancillary space that we like, where we have an ad rating and a fair value of 95 rupees. अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो इसमें चार ब्रॉड बिजनेसेस आते हैं। एक है वायरिंग हार्नेसेस, ये बेसिकली आप व्हीकल में जो वायरिंग्स लगती है वो है। दूसरा आपका है विजन सिस्टम्स, जो कि आपके मिरर्स होते हैं। तीसरा मॉड्यूल और पॉलीमर प्रोडक्ट्स है, ये जो गाड़ी के अंदर इंटीरियर में जो प्लास्टिक पार्ट्स लगते हैं वो। और बाकी उनका एक और बिजनेस है जहाँ पर मल्टीपल बिजनेसेस है, जैसे कि लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिसिशन मेटल मॉड्यूल्स है। अगर आप इनका Q3 नंबर्स देखें तो Q3 नंबर्स अच्छे रहे थे। इनके जो एबिटा आए थे वो हमारे एस्टिमेट से अच्छे थे, रेवेन्यूज भी हमारे एस्टिमेट से अच्छे रहे थे। रिसेंटली कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया था, सम 10 days back or something. They had announced that they have acquired a company called SAS from Forasia. ये कंपनी जो है ये मदरसन को हेल्प करेगी वैल्यू एड प्रोडक्ट्स में एम्बार्क करने के लिए, विच इज अ गुड साइन बिकॉज वैल्यू एड प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स अच्छे होते हैं। Secondly, this acquisition will also help SAMIL to cross-sell their existing products over the coming years. So एक बहुत important factor ये होता है कि अगर आप कुछ products बना रहे हैं और आप कुछ products आप sell कर रहे हैं, तो with acquisition आप अपने existing products भी वो companies को sell करना start कर सकते हैं over a period of time. The third thing what they'll also benefit out of this acquisition will be the access to portfolio with significant electric vehicle share. So in our view right now, Samvardhana Motherson is well placed to benefit largely from the medium term because of the increase in electronics content per car, especially in the electrical contents. जो car में electronic contents increase हो रहे हैं तो उसका benefit आएगा। Second, company के relationship जो OEMs के साथ है वो बहुत strong है। तीसरी, हम suppliers का consolidation देख रहे हैं, जैसे कि acquisition वो एक example है। और चौथी चीज, स्पेशली हम प्लास्टिक कंपोनेंट पार्ट में ये चीज देख रहे हैं। तो near term outlook is also gradually improving. This is on account of because of steady recovery that we are seeing in the European Union region and also because of reopening in China, because ये कंपनी के majority revenues बाहर से ही आते हैं, out of India आते हैं। So वहाँ पर हम रिकवरी देख रहे हैं, तो gradually वहाँ भी सिचुएशन थोड़ा improve हो रहा है। And we believe this company is well positioned to benefit. इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है और इनमें से 37% जो इनकी ऑर्डर बुक है EV OEM से है एज ऑफ सितंबर 2020 की, तो जो इनकी ऑर्डर बुक थी। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स। एक और पॉजिटिव ये है कि हमने एनर्जी प्राइसेस में थोड़ा सॉफ्टनिंग देखा है, तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो भी एक अच्छी चीज है। सो एबिटा के हिसाब से हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी FY 22 to 25 पे एबिटा ग्रोथ विल बी अराउंड 24% CAGR बेसिस पे, और अर्निंग्स FY 24 में हम देख रहे हैं 77% ग्रोथ और FY 25 में अराउंड 33% ग्रोथ देख रहे हैं। हमने कंपनी को सम ऑफ टोटल पार्ट्स यानी अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग तरीके से वैल्यू किया हुआ है, और we are optimistic on this company. We have an ad rating and a fair value of 95. Over to Jatin. Thank you, Arun. So on the chemical front, chemicals and the agrochemicals, we are positive on PI Industries, where we have a buy rating and a fair value of 3,550. The fair value of the target of the reports are based on the 12-month horizon basis. So while we are positive on PI industry, if you look, the agrochemical industries was going on to a big down cycle in terms of the inventory overhang and compression in the margin. However, if you look the last quarter numbers, the company however managed to offset the lower than expected revenue with a strong margin. Now, the drivers which was driving the margin was largely a higher gross margin and lower other income. So we believe that definitely this trend will continue and inventory overhang is unlikely to impact the overall earnings of the company. However, the key thing that we believe that will drive the stock and which was our concern on the PI industry. Because if you look the product concentration risk, which remains a key concern for the PI industry. However, the one of the product which is their top CSM, which is custom manufacturing product, which is gyrosulfan, is contributing almost half of the overall division's revenue and is clocking more sharply better than the expected growth in the world market, because the company has acquired a registration in the new geographies and is likely to gain a share from the glyphosate. Now, because of this, we believe that outlook continues to remain strong and there is no impact of channel inventory overhang.
and hence company is also confident of delivering 20% over 20% revenue growth for the next year. And on basis of this, we expect earning per share to grow at 22.8% in FY24 and 21.4% in FY25. So these are the theses where we continue to maintain a positive view on PI industry, where we have an ad rating and a fair value of 3,550. That's all from my side. Over to Purvi. Thank you, Jatin. So the stock that we've chosen this time is from hospital segments, that's Apollo Hospitals. And as you all can see, we have a buy rating on the stock with a fair value of 5,520. So this at yesterday's closing gives you an upside of 25.4%. ये स्टॉक हमने कई बार बताया है, सो अभी और एक बार इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग नेक्स्ट 15 to 18 months में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छी ट्रैक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी को लेके, जो अगर आप देखें तो Q3 में ऑक्यूपेंसी वाज एट 65%. So the management is expecting कि इस occupancy levels को बढ़ाया जा सकता है over the next 15 months and can be taken up to 75%. ARPOBs माने कि average revenue per occupied bed जो Q3 में अगर आप देखें तो 12% से grow किया है. The management is expecting कि अगले 3 साल में ये 8% के CAGR से grow कर सकता है because of better payer mix, improving occupancies like I already said. So these are a couple of reasons जहाँ पे हम लोग expect कर रहे हैं कि इन दो वजह से आपकी margins में भी अगर आप देखें तो next 2 years में आपको 280 basis points की improvement आ सकती है. So basically what we're trying to say is that the financial matrix is improving. So this will lead to free cash flow generation. And हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका हॉस्पिटल और ऑफलाइन फार्मेसी बिजनेस जो है इन दोनों को मिला के अगले 3 साल में 3,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट होने की शक्यता है. सो वी फील कि द फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. उनका 24/7 अपोलो जो है वो अभी भी लॉस मेकिंग है एंड इसको टर्न अराउंड होना बाकी है, बट इन सारी चीजों के बावजूद भी they will be doing quite well over the next 12 to 15 months. And Apollo Hospitals happens to be our preferred pick in this space as well. That's all from my end. Over to Pankaj. Thank you, Purvi. Myself, Sumit. First, in IT space, we are recommending Tech Mahindra with a fair value of 1,240 rupees with a buy recommendation. If you look, a lot of changes are happening in Tech Mahindra. First is the top management change. We are expecting a new MD in next 3 months. That market is or investors are waiting for quite long time. जैसे ही वो होगा, it is expected कि there will be a turnaround in the company, though it will take 1 or 2 years, but it will be quite positive for the market, and that is what that is why the investors are just eagerly waiting who is the new face which is coming. If you look at the BPO business of Tech Mahindra, the performance has been remarkable, outperformed on both revenue and growth. The company has successfully expanded $2 crore revenue clients from 50 to 65 in Q3 FY22. That is a remarkable achievement. In fact, अगर आप NASSCOM का recent reports पढ़ेंगे तो one of the major tailwinds जो IT sector में है is the 10% expansion in the client base. So that is a tailwind which will help सब companies, IT companies को help करेगी. Tech Mahindra का हमको लगता है कि earnings can grow by 14.6% in FY24 and 19.1% in FY25. कंपनी को हमने 16 times वैल्यूएशन पे दिया है ऑन December 24 EPS. रिलेटिव बेसिस पे अगर अपन करें कि भाई आप कोई पूछेगा इन्फोसिस से कंपैरिजन में ये कैसा है या TCS के कंपैरिजन या विप्रो के कंपैरिजन में, हमने इसको लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल दिया है. वी आर वेटिंग कि मैनेजमेंट चेंज होने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं कैसा और अर्निंग्स अपग्रेड का पोटेंशियल दिखता है, उस हिसाब से वी विल अपग्रेड. बट एज ऑफ नाउ, considering the growth which the company has shown in the recent past, we have valued the company on 16 times. Valuation looks very attractive to us.
So one can buy this stock from long-term perspective. Next stock is from oil and gas space. We like IGL. IGL वो कंपनी है जिसका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रेजेंस है। बहुत जनों को ये नहीं मालूम होगा कि आईजीएल का एक्सपेंशन करके राजस्थान में भी जा रही है। So volumes will go up significantly from here. एक सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आदमी को देखना चाहिए सेफ्टी ऑफ मार्जिन कितना है कोई भी स्टॉक में। हमें लगता है एज ऑफ नाउ सेफ्टी ऑफ मार्जिन इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ आईजीएल। और ऐसा क्यों लगता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो करंट वॉल्यूम जो है कंपनी के अंदर 8.3 से 8.4 MMSCMD वॉल्यूम कर रही है। उसमें से 65% दिल्ली करता है, यूपी 20%, हरियाणा 15% प्लस राजस्थान। ये वॉल्यूम 8.3 MMSCMD से बढ़ के 10 MMSCMD हो जाएगा बाय FY25। तो ये कंपनी की गाइडेंस है। जो इंडस्ट्रियल वॉल्यूम अभी रिसेंट में Q3 में इम्पैक्टेड हुआ था वो मेनली हुआ था बिकॉज ऑफ हाई LNG प्राइसेस एंड लो प्रोपेन प्राइसेस। तो क्लाइंट शिफ्ट हो गए थे प्रोपेन की तरफ, बट दैट ट्रेंड इज रिवर्सिंग। ट्रेंड क्यों रिवर्स हो रहा है? बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समर्स, विंटर्स डिमांड हैज गॉन, तो LNG प्राइसेस आर कूलिंग अप, बट एट द सेम टाइम प्रोपेन प्राइसेस आर गोइंग अप। तो पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। इसका बेनिफिट सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिलेगा, इंक्लूडिंग MGL, गुजरात गैस एंड IGL। मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल है ओवर ए मीडियम टर्म, सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। उसके अलावा हमें ये भी लगता है कि मार्जिन्स 7 to 8 रुपीज पर MMSCMD में कर सकती है कंपनी, विच इज अगेन पॉजिटिव। केपेक्स प्लान से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ द फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ विल बी देयर। कंपनी ने बोला है कि 1400 से 1500 करोड़ का केपेक्स करेगी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। तो दैट विल रैंप अप वॉल्यूम्स फ्रॉम न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना आपका CNG की साइड में ज्यादा मिक्स है उतना ज्यादा आपको मार्जिन्स मिलेंगे एज कंपेयर टू एनी इंडस्ट्रियल वॉल्यूम। सो CNG में कंपनी ने बोला है कि 75 से 80 CNG स्टेशन 2023 में ऐड करूंगा और हर साल में 100 न्यू CNG स्टेशन ऐड करता जाऊंगा। सो दैट मीन्स द वॉल्यूम फ्रॉम CNG, हाई मार्जिन CNG विल इंक्रीज। रिटर्न प्रोफाइल विल सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आता है इज द डिविडेंड। How is the dividend payout? It's almost 25% of the profit will be distributed as dividend. और जैसे कि मैंने बताया कि FY24 एंड के तक कंपनी 1 MMSCMD का एडिशनल वॉल्यूम ऐड कर देगी because of the new additions of new geographical areas. So that's all from my side. Hand over to Rini. Thank you so much, sir. Now we will open the floor for Q&A. Guys, use this opportunity and drop your questions in the chat box. We already have some questions. So I'll start with the first question. Indar Mohan Chawla is asking for views on Muthoot Finance and Clean Science Technology. I think Jatin and Hemali can answer this. Jatin, you want to go first? Sure, Rini. So, excuse me. On clean science, I mean, let me give rating and the target price before I give you the thesis. So we have an ad rating with a fair value of 1600 rupees. So clean science, if you look at the last couple of results, the company last quarter numbers have surprised positively on the higher margin, and which we have seen a sharp improvement in the margin after the erosion in the first half. However, if you look at the demand and the growth outlook continues to remain positive with new product and capacity expansion is likely to drive the rapid growth in the coming years. However, yes, there is a competitive risk do exist in the clean science business where we are finding a couple of new competitors entering into the same product. Taking that into consideration and change in the estimate, we believe that the valuation after the recent correction are more realistic
at this point of time where the stock is trading at 32.2 times FY25 numbers, and we believe that since being a realistic, we have upgraded the stock to add. So yes, clean chance is the add with a fair value of 1600. Hemali, over to you. Thank you. On Muthoot, we have a buy on the stock. Why we like the stock is because one, it's a very strong ROE model because of its business model and the rates that it gets. The concerns around Muthoot Finance has been its loan growth, which has been very muted given the competition from banks for gold loan companies, and a likelihood of a NIM compression, but that is also a function again of how much they will pass through their yields in the rising interest rate scenario. So these two concerns are persistent in the near term. However, organically the model is a high ROE model, and that is why we are buy on stock. Thank you, Hemali. Next question is from FMCG space. Why HUL and Asian Paints are very volatile? Amit sir, can you please answer this one? Yeah. देखो ये both companies are very low beta stocks, but currently both the stocks are very volatile primarily due to two reasons. Currently, both companies are facing competition and slowdown in consumption. Overall demand has continued to be weak in case of staple as well as discretionary, primarily due to high inflation and also some impact of COVID pandemic. तो पूरा कंज्यूमर स्पेस में हमने लास्ट क्वार्टर में क्या देखा है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड ज्यादा थे देन अर्निंग्स अपग्रेड प्राइमरली ड्यू टू मिसेस इन नेट इनकम. On the other hand, we have also seen कि raw material prices काफी करेक्ट हुए लास्ट 6 महीने में, एंड इसकी वजह से most consumer companies have seen strong expansion in EBITDA and gross margins. So consumer companies including HUL and Asian Paints are facing mixed sentiments currently, which is leading to volatility in this company. In fact, both companies enjoyed leadership position for a very long time in their respective businesses and also enjoyed stretch valuation and trust of many senior investors. So this is also leading to volatility in the stocks despite a slowdown. In terms of rating, we have a reduced rating on Asian Paints with a target price of 2800, primarily due to upcoming competition from Grasim, JK Cement and JSW Paints. And we have an ad rating on HUL with a target price of 2825. This is led by expectation that consumer companies will start showing good numbers in second half of FY24 and will recover faster than discretionary space. Thank you, Amit sir. Nirmal Burde is asking for views on BEL. Pankaj sir, over to you. Yeah, sure. So BEL पे हमारा reduced rating है, and we have a target price of 98 rupees. So if we believe that there is a near-term headwind in the performance, however, over a medium to long term, the story is good. Point is, like, if you look at the results, Q3 results, it was also below our expectation in terms of operating margins and overall PAT. And the important concern that we believe is the order inflows. So 9 months में company ने करीबन 3600 करोड़ का order inflows किया है, and they are guiding for 20,000 crore order book for FY23, order inflows for FY23. So asking rate for Q4 is quite high. However, they have a strong bid pipeline, and they are confident that some of the orders were around 12,000 crore जो है वो add कर लेंगे. That we have to see in this quarter. And another thing is the working capital that has also increased, and due to that the overall cash balance of the company is reduced from roughly 7,500 crore to 3,000 crore. So ये near term headwinds है, इसकी वजह से हमारा reduced rating है, and we have fair value of 98 rupees. Next question is a participant wants to know views on auto space. Arun sir, take this one. Yeah. देखिए ऑटोस में वी हैव व्यूज विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स. तो अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट देखेंगे तो वहां पर व्यूज थोड़े नेगेटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज डोमेस्टिक साइड पे हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, बट दैट इज कमिंग ऑन लो बेस टू व्हीलर सेगमेंट में. और एंट्री लेवल जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहां पर हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं. एक्सपोर्ट्स में
आप फरवरी मंथ के भी नंबर्स देखें, इवन जैन के नंबर्स देखें, तो एक्सपोर्ट साइड में बहुत मैसिव डिक्लाइन आ रही है एक्सपोर्ट नंबर्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस वी आर नॉट रियली पॉजिटिव, बट पैसेंजर व्हीकल स्पेस में हम पॉजिटिव हैं। वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है, इवन दिस मंथ अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ रही है, एंड दिस हैज बीन ड्रिवन बिकॉज ऑफ द एसयूवी सेगमेंट। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो कंपनीज है वहां पर उनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है, सो दिस आल्सो गिव्स गुड विजिबिलिटी कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी ये सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रहेगी। Commercial vehicle segment is again where we have seen growth and we expect this growth to continue, and within that आप देखेंगे तो medium and heavy commercial vehicle space में growth अच्छी रही, even for month of February देखेंगे तो काफी अच्छी growth रही है वहाँ पर। तो ट्रैक्टर इज अगेन अनदर सेगमेंट वेयर लास्ट हम 6 से 7 महीने में हम काफी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं। फरवरी में भी एस्कॉर्ट्स एमएनएम दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। So except for two-wheeler segment, I think other segments are doing relatively well at this point in time. Stock specific हम जाएं तो वहाँ पर हमें M&M अच्छा लगता है, वहाँ पर हमारा 12-month fair value 1535 है। The other stock that we like in the commercial vehicle space is Ashok Leyland, वहाँ पर हमारा ad rating है, fair value 160 रुपीस है। अगर आप एंसिलरीज में देखें तो वहाँ पर हमें उनो मिंडा अच्छा लगता है, और हमने संबंधरा मदरसन की बात की थी, वो हमें अच्छा लगता है। Arun sir, can you answer next question as well? So with strong summer season expected ahead, should we look at any AC stocks? Yeah, so see, this time around the summer seems to have started a bit early. So summer season is expected to be strong this time around, and AC stocks हम already some कुछ movement देख रहे हैं in terms of stock prices. Last 1 month में हमने वोल्टास में बूस्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट देखी है। एक और स्टॉक जहाँ पर आप देख सकते हैं वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। दिस इज अगेन अ स्टॉक व्हिच यू नो gives or it's an outsourcing where you know they supply parts and components and even ACs to the AC players. So that's another stock that we like. अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो वहां पर वोल्टास में करंटली तो हमारा सेल रेटिंग है और ब्लू स्टार में हमारा पॉजिटिव व्यू है, बट स्टॉक हमारे टारगेट प्राइस से थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर अगर मार्केट रिलेटेड करेक्शन की वजह से अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो वी कैन ऐड ब्लू स्टार। एम्बर में वी आर पॉजिटिव एंड वहां पर हमारा वहां पर अपसाइड है, वहां पर हमारा अभी टारगेट प्राइस 2304 रुपीस का है। सो दीज आर द स्टॉक्स वी कैन लुक एट एंड I think even near term में जिस हिसाब से I mean if we are looking at very strong AC sales, these AC stocks can actually be in momentum and you know see some action in the near term as well. So. Thank you. Next is views on metal sector. What is happening in this space? Jatin? So metals, yes, we have seen a rally in the metals sector in month of December, January, which was largely behind the narrative that was coming up from China, that with the opening of the China, there would be an uptick in the overall infrastructure and the real estate demand. But however, they went into a new year and probably we will see whether this narrative has been actually played or not. If there is an easily play of the narrative, then yes, we can see the demand for the metal sector will continue to remain strong in the coming quarters, and that will support the prices. If you look the overall on the costing front, yes, the costing has moved up, but at the same time, even the realization has moved up. So in coming quarters, there would be some uptick in the margin where you will see, but sustainability of this margin and sustainability of the prices will be key things to watch out for. So on the ferrous space, other than NMDC, we are cautious on the entire steel companies. But if you look on the aluminum or ferrous space, we have a ad rating on Hindalco. We believe that Hindalco near-term earning might remain in pressure because of the Novelis decline in the overall earnings of EBITDA per ton, where management has indicated that the $500 per ton is in the near to medium term, that there are headwinds in terms of the overall demand. But having said that, we believe that even if you take $450, $460 of EBITDA per ton and the numbers coming from the Hindalco standalone business, we are quite positive on the Hindalco as on a non-ferrous space and NMDC from the ferrous space. Thank you, Jatin. LNG prices are coming down. Who will be the key beneficiaries? Sumit sir, can you take this one? Yeah, you are right in pointing out that almost 23% of the raw material cost in terms of APM will correct because of the Dr. Kirat Parekh committee's report.
तो 23% कोई भी इंडस्ट्री के, कोई भी कंपनी का अगर रॉ मटेरियल कम हो रहा है तो दे विल गेट ह्यूज बेनिफिट. सो $8.5 पर MMBTU की आज की डेट में प्राइस चल रही है APM गैस की, which will fall down to $6.5 per MMBTU. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक IGL एंड MGL, उनका 75% जो वॉल्यूम है वो APM ड्रिवन है. गुजरात गैस का 25% इज APM ड्रिवन. इसका मतलब क्या है, इनकी 75% की जो वॉल्यूम आ रही है वहां पे 23% का रॉ मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन आने की उम्मीद है वंस द डॉक्टर किरण पारेख कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगी. इसके दो फायदे हैं. इनके मार्जिन सुपर डुपर इंक्रीज हो जाएंगे. ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्जिन वो पास ऑन करेंगे कस्टमर को, कुछ मार्जिन अपने पास रखेंगे. इससे क्या होगा, इससे सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे. तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक IGL एंड MGL, इनके वॉल्यूम इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ इम्प्रूव परचेजिंग पावर, और मार्जिन इंप्रूव होंगे क्योंकि कोई भी कंपनी फुल बेनिफिट पास ऑन नहीं करती, कुछ अपने पास रिटेन कर लेती है. तो वॉल्यूम प्लस margin improvement will be lead to a significant improvement in the PET. तो ये एक फायदा है. अब इनमें आप बोलेंगे कि मुझे हायरार्की दो कि कौन सी ज्यादा अच्छी कंपनी है, तो मैं IGL और MGL को एक बकेट में डालूंगा और गुजरात गैस को दूसरी बकेट में डालूंगा, बिकॉज गुजरात गैस का इंडस्ट्रियल वॉल्यूम ज्यादा है. ये मैंने आपसे 75% वॉल्यूम की बात करी है ऑन द APM साइड. अगर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दूसरा पार्ट जो है इंडस्ट्रियल साइड, वहां पे LNG प्राइसेस हैव फॉलन डाउन सिग्निफिकेंटली और वहां पे भी इनको वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है, तो दैट विल आल्सो ऐड टू देयर मार्जिन्स. सो ब्रॉडली इन नटशेल, ऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शुड डू वेल फ्रॉम हियर. द केविट इज ओनली, जो रिस्क फैक्टर हमें दिखता है कि अगेन कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आए जिससे क्रूड बढ़ गया वापस सिग्निफिकेंटली, देन इट्स अ अदर केस. अदरवाइज वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्हिच इंक्लूड IGL, MGL and Gujarat Gas. On the industrial side, if you look, we are also bullish on GSPL. That's all from my side. Hand over to Renu. Thank you so much, sir. Dear participants, now due to time constraint, we will end the Q&A session here. I would like to invite Shrikant sir for any closing comments. And sir, if I could just squeeze in one question for you. So Nishikant Kolhe is asking probable higher relative growth sectors in financial year 2023-24. Okay, sure. I think in this particular month, we are going to see the market between the broader range of 17,000 to 18,000. We are not expecting market to cross the level of 17,800 so easily. But in case if we see any momentum because of any specific news flow, then yes, we may see the levels of maybe 18,000 on the higher side, which is the best case scenario that we are seeing. But the ideal strategy should be to look for reducing weak long positions or leverage long positions between or around the levels of 17,800. That's the overall view. Yes, it is completely depend upon how the news flow shapes up, because the markets are now over concentrating on number of things. Like macros are now very much known to everyone. About micros also we have discussed a lot, and I think state knows a lot of things, that which sectors are going to do well and which are going to underperform and all. So I think now the news flow, unexpected sort of news flow, or which is like not known to the street, I think on that the market will react. Otherwise market is going to spend time between the broader range. So हमें लगता है कि मार्केट में अगर आपको फोकस करना है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कीजिए राइट नाउ. नो डाउट सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने मिलेगी, लेकिन वो लगता है कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड हो सकती है. अदरवाइज हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो करेक्शन के बाद अच्छा रिबाउंड कर सकते हैं, और ये मार्केट में हमें लगता है कि ऐसे एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी. जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि लाइक ऑटो में देखना है तो हमें जो फोकस है वो
फोर व्हीलर्स में, ट्रैक्टर साइड पे जो कंपनीज है वहां पे हम फोकस करेंगे। और करेक्शन अगर आ रहा है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कुछ दिनों पहले 1400 के करीब था, नाउ इट इज कोटिंग एट 1290 1270 समथिंग। अगर इसमें अगर और करेक्शन आ जाता है तो ये स्टॉक काफी एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो जाएगा टू बाय एंड होल्ड। पीवी फिनटेक के ऊपर हमने कई बार बात की थी, और वो स्टॉक भी जैसे ही मोमेंटम बना और न्यूज फ्लो बना, ये स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो वैसे ही लग रहा है कि अगर कुछ करेक्शन अगर आता है तो हमने कई सारे वैसे स्टॉक कवर किए हैं, और इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर हमें बार बार फोकस करना है। आईटीसी हमें अच्छा लगता है, अगर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक अच्छा ही रहेगा उसमें, और हम हमारी जो भी एफर्ट्स है वो लगा सकते हैं टू बाय ऑन डिप्स। केमिकल्स में हमने कई बार एसआरएफ को रेकमेंड किया है, इस बार हमने पीआई इंडस्ट्रीज को लिया है, और हमें लगता है ये भी स्टॉक इन लेवल्स से काफी अट्रैक्टिव है फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे रिलेटिवली कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वैसे कई सारे सेक्टर्स हैं कि जहां पे हमें लगता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर ग्रोथ बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जहां पे बजट में फोकस हुआ था, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग कंपनीज, वो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है बीएफएसआई है कि जिनके नंबर्स इस बार भी अच्छे थे, और उसी ने इम्पैक्ट Q3 के ओवरऑल रिजल्ट्स को उसने इम्पैक्ट देखा जाए तो एक पॉजिटिव शेप दिया था। तो मुझे लगता है बीएफएसआई हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बीएफएसआई में अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स करंट लेवल से भी एक डिसेंट अपसाइड दे रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर हमें फोकस करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। लेकिन यस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इंजीनियरिंग, बीएफएसआई यहाँ पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है केमिकल्स में कई सारे कंपनीज अच्छे नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस, वहां पे हमें लगता है कि रिकवरी बनेगी। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर पे फोकस करना है तो मुझे लगता है कि इन इन स्पेसिफिक विद अ मीडियम टू शॉर्ट टर्म व्यू अगर हमें फोकस करना है तो हॉस्पिटल्स है कि जहाँ पे हमें लगता है कि कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, और हमने मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स पिछले कई महीनों में कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे लगता है कि एक बिल्कुल क्लोज वॉच होना चाहिए। और इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे भी बन सकते हैं। तो ब्रॉडर अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे लगता है मैक्रोज में एक जो पॉजिटिव पार्ट आज के दिन में हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक न्यूज फ्लो की एक बड़ी कल एफआईएस की बाइंग आई थी, और 15,000 करोड़ के इनफ्लोज के बाद हमने देखा कि आज करेंसी ने एक यू टर्न लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किया है। 8197 के करीब अपनी इंडियन करेंसी थी। इनफैक्ट अगर आप फ्यू डेज पहले की अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो गवर्नमेंट ने काफी क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि यहाँ से करेंसी अपनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और 80 टू 80 के करीब जो करेंसी थी टुडे, अगर आप आज के दिन में देखें तो वो 81, 95, 97 के करीब आ चुके हैं। तो अगर ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को देखें, इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए जो डोमेस्टिक न्यूज फ्लो है, अगर आप वो देखते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द आरबीआई साइड और फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, आई थिंक ऑल आर एनकरेजिंग। द ओनली मिसिंग पार्ट इज दैट कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा है, रैली नहीं बन रही है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस है वो काफी एक्सपेंसिव, आपको उन्हें फोकस करना है। अगर आप करंट ईयर के साथ देखेंगे तो हम लोग 21, 22 के मल्टीपल्स के आसपास है। अगर हम नेक्स्ट ईयर, आई मीन टू से 2024 वन ईयर फॉरवर्ड के बेसिस पे देखेंगे तो वी आर समवेयर क्लोज टू 18, 19, और अगर हम लोग 25 को कंसीडर करेंगे तो 16 के मल्टीपल्स पे। यस, अगर एशियन मार्केट्स को देखें तो दे आर समवेयर क्लोज टू 15 टाइम्स। अगर ये 15 और 18 का गैप अगर और नैरो अगर होता है आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, तो आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे मार्केट में भी हमें पॉजिटिव वाइब्स देखने मिलेंगे। लेकिन राइट नाउ हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, हायर लेवल्स पे आपको आपके एक्सपोजर को, लिवरेज पोजीशंस को कम करना है। दैट शुड बी द फाइनल स्टेप। Thank you, sir. Now, just a reminder before we end today. Guys, please follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for regular research updates and stock ideas. Thank you, everyone. Thank Thank you. you.